Ladies and gentlemen, distinguished guests, and esteemed viewers, a very warm welcome to all of you to this captivating talk show. It is an absolute pleasure and honor to present before you today as we embark on the journey of stimulating conversations, enlightening insights, and unforgettable moments. In this talk show, we have gathered some of the most remarkable personalities sharing their expertise, stories, and unique perspectives. Our aim is to create an atmosphere of knowledge exchange and inspiration that will leave an indelible mark on each and every one of you. Throughout the course of this talk show, we will delve into a diverse range of mathematical topics, exploring the art of teaching mathematics and so much more. Our esteemed guests are not only the masters of their craft, but they are also individuals who have made a profound impact on society through their accomplishments and contributions. It is our sincere hope that by the end of this talk show, you will leave with a renewed sense of inspiration, a broader perspective, and a deep appreciation for the incredible diversity and talent that exists within our society. Our first guest is Mr. Arindam Roy Choudhury. Welcome, sir, to our talk show. Arindam sir has been teaching mathematics passionately for the last 26 years. He has been the principal for the last 16 years. He considers himself more of an educator than an administrator. His teaching experience goes from middle school classes to postgraduate level. At present, he is the principal of GD Goenka Public School, Jammu. Earlier, he was the principal of Kalpavruksha Model School, a semi-residential cum day boarding school affiliated to CBSE in Belgaum district of Karnataka. With CBSE, he has played different roles, right from being a part of CBSE affiliation committee to being a center superintendent, an evaluator, as well as head examiner of mathematics. During CBSE mentoring program, he had the opportunity to mentor schools and to be city coordinator of Belgaum for National Testing Agency conducted examinations. Mr. Arindam was an impaneled teacher trainer for CBSE. He was a resource person for pedagogical leadership programs representing CBSE Center of Excellence, Chandigarh. He was one of master trainer for the Khelo India School Fitness Program. He's a MSc MPhil in mathematics, a research fellowship at NCRT New Delhi, and has fellowship in curriculum mapping in University of North Carolina, USA, with PG diploma in educational administration from Symbiosis Pune. He also holds certificate in strategic leadership from IIM Ahmedabad. A very warm welcome to Mr. Arindam to this episode of Power Hour. Thank you so much. Thank you. We have amongst us Mr. Mohit Bansal. He's a remarkable teacher hailing from the district of Shamli, UP. His journey began with a tech degree in computer science, followed by an MBA and a master's in education, shaping him into a versatile educator. What sets Mohit sir apart is prowess in teaching mathematical skills and formulas, transforming these often complex concepts into easily understandable ones. His innovative approaches and tricks not only simplify mathematical concepts, but also aid in memory retention, making learning a joyful experience for his students. He's been honored with state awards for his exceptional lesson plans, artistic talents in puppetry, and groundbreaking research on the integration of ICT in education, which was published in an international journal. Adding to his list of achievements, Mohit sir has been bestowed with the prestigious National Builder Award by Rotary India Literary Mission. Beyond the physical classroom, Mohit sir extends his reach through social media platforms using his pages Education Boom on Instagram, Facebook, and YouTube as avenues to share new educational tricks, innovations, and insights. With a whopping and impressive number of followers in various social networking sites. However, his contribution to the society extends far beyond his exceptional teaching abilities.
His dedication to nurturing the minds of young children exemplifies his unwavering commitment to education. Thank A you so very much. warm welcome to Mr. Mohit in this episode of Power Hour. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. We now begin with the question answer round. Arindam sir, the first question is coming up for you. When did you realize that you were passionate about mathematics and wanted a career in it? Oh, yeah. Mathematics was always a favorite subject right from the time when I was a student. Are you able to hear me? Yes, sir. Can I- Absolutely clear. Okay. So now, if you talk about getting into teaching mathematics, I suppose that has happened as an accident. The story is long. To cut it short, I feel that it's always like, it has always pulled me towards it, knowingly, unknowingly. And so finally, at the end of the day, I've been right from teaching PG classes to coming down to fifth standard when I had to teach that particular class. But let me tell you, it's always an enjoyable aspect, and I am very, very happy that today I'm a maths teacher. That was a truly inspiring answer, sir. Thank you so much. Mohit sir, the next Yeah, ma'am. question coming up for you. Math is perceived as a very difficult subject by many students, Raja, many students. What can be done to overcome the fear? Yeah. Actually, ma'am, there is a dilemma about mathematics. लोगों ने ये डायलेमा बनाया हुआ है कि मैथ्स एक बड़ा ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट और एक प्लेफुल सब्जेक्ट है. मैं मैथ्स को हमेशा बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ बच्चों मैथ्स नहीं है, ये खेल है. हमें खेल खेल में मैथ्स पढ़ना है. मैथ्स से बिल्कुल नहीं डरना. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि हम टीचर्स की भी एक गलती रहती है बच्चों को समझाने में. टीचर्स एक डायलेमा बना देते हैं कि मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट. समटाइम्स बच्चे भी ये मेंटेलिटी बना लेते हैं कि मैथ्स बड़ा डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं होगा. लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स एक प्लेफुल सब्जेक्ट है. इवन आप नोटिस करेंगे, मैं बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे भी नोटिस करते होंगे, हमारे स्कूल्स में क्लर्क्स होते हैं. कभी भी देखा हो क्लर्क इतने पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ अनएजुकेटेड भी होते हैं. पर अगर आप उनको एक 500 का नोट देंगे और उनको कोई सामान लाने के लिए बोलेंगे, उनको 20 रुपीज का कोई सामान लाने के लिए बोलेंगे, वो अपने माइंड में खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे कि मेरे 480 वापस लाने हैं. उन्होंने नहीं पढ़ा कि मैथ्स क्या है, उन्होंने नहीं पढ़ा सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, उन्हें नहीं पता एडिशन कैसे होती है. लेकिन मेंटली उन्होंने इस चीज को सीख लिया एक प्रैक्टिकल रूप में कि ये मेरे पास इतने बच गए हैं. तो उनको कोई फियर नहीं है और उन्होंने फिर भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया. तो ये एक मेंटालिटी है कि मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है. मुझे नहीं लगता कि मैथ्स डिफिकल्ट होता है. और मेनली हम स्कूल्स में भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा. मैं कुछ ही एक्टिविटी दिखा सकता हूँ कि उन एक्टिविटी के द्वारा भी हम खेल खेल में बच्चों को हम मैथ्स सिखाते हैं स्कूल में. एक्चुअली मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करता हूँ और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती जितनी प्राइवेट स्कूल्स में होती है. हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते जितने प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं. तो हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से ही बच्चों को सिखाना होता है. हमारे पास फाइनेंशियली इतने बैकअप नहीं होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में. तो हमें बैकअप भी खुद क्रिएट करने होते हैं, हमें रिसोर्सेज भी खुद बनाने होते हैं और उन रिसोर्सेज से हम बच्चों को पढ़ाते हैं. तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें बच्चे बिना रिसोर्सेज के खेल खेल में सीख रहे हैं. और जो हम अपने मैथ्स से संबंधित उनको समझाना चाहते हैं वो बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं. और कुछ उसमें मैंने TLM की हेल्प से बच्चों को सिखा रखा है, इक्विपमेंट जो मैंने खुद बनाए हैं. और बच्चे उसको इस तरह सीखते हैं, वो उनके माइंड में परमानेंटली फीड हो जाता है क्योंकि वो इक्विपमेंट की हेल्प से प्रैक्टिकली उसको देख रहे हैं. प्रैक्टिकली वो देख रहे हैं कि ये अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये इसका आंसर ये आ रहा है, क्यों आ रहा है. Right, sir. Right. वीडियो है वो, यू कैन प्ले द वीडियो प्लीज. You can play the video. Right. ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल. कौन सी संख्या लिखी है? 7125. अब तुम नंबर्स गेम में संख्या बनाओ. उसमें ये जो व्हील्स हैं इसमें वही संख्या बनाओ. वेरी गुड. 7000. 100 कितने हैं? वेरी गुड.
वेरी गुड। वन को हम लिखते हैं आई, क्या लिखते हैं आई, और टू को लिखते हैं आई, 2 बार आ जाएगा, 1 2। 3 में आई 3 बार आ जाएगा। अब देखो 4 को छोड़ दो, पहले हम 5 पढ़ते हैं। 5 को क्या लिखेंगे वी, 5 को क्या लिखेंगे वी। अगर देखो वी से हम पहले आई को लगाएंगे तो 5 में एक कम हो जाएगा, और वी के बाद में लगाएंगे तो 5 में एक बढ़ जाएगा। इस नेट की हेल्प से बच्चे क्यूबॉइड के फेसेस, क्यूबॉइड के एजेस, क्यूबॉइड के वर्टिसेस इजीली समझ सकते हैं, और क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी इजीली लर्न कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम क्यूबॉइड के फेसेस बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह हम बच्चों को एजेस और वर्टिसेस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब हम बच्चों को क्यूबॉइड के नेट से क्यूबॉइड बनाकर भी दिखा सकते हैं। हमने इसको पुल किया और ये देखिए ये हमारा क्यूबॉइड बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम बच्चों को क्यूबॉइड के फेसेस बता दिए, क्यूबॉइड के एजेस बता सकते हैं, क्यूबॉइड के वर्टिसेस बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह 12 एजेस होते हैं, वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बच्चे क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी इससे आसानी से निकाल सकते हैं। कल हमें दिल्ली में 2 चोर मिले, ये ट्रिक है, इस लाइन को याद रखनी है। कल हमें दिल्ली में 2 चोर मिले। कल है किलोमीटर, किलोमीटर को हम कल से याद रखेंगे। हेक्टामीटर को हमें, डेकामीटर को दिल्ली, मीटर को में, डेसीमीटर को 2 और सेंटीमीटर को चोर से, मिलीमीटर को मिले से। ये इसी सीरियल में लिखनी है। अब देखो किलोमीटर को मीटर में बदलना है। किलोमीटर कहाँ है, ये रहा। मीटर कहाँ है, ये रहा। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चे बिना रिसोर्सेज के ही हम उनको स्टिक्स के माध्यम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है सीढ़ियों का। घर की सीढ़ियां होती है ना, तो अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हो कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो तो असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, और ऊपर से नीचे उतर रहे हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ज्यादा से कम की तरफ। देखो ये हमने सीढ़ी बनाई है और यहाँ पर नंबर लिखे हैं, लिखे हैं नंबर। अब देखो ये बटन हो, ये आप हो, ये क्या नंबर है 10। अब आप 10 से आगे किस पे आगे 60 पे आगे, तो कौन सा ऑर्डर हुआ, आरोही क्रम। कौन सा हुआ, असेंडिंग ऑर्डर। और 60 से तुम फिर जंप करके आगे 100 पर, अब क्या है, आरोही है ना। अब 100 से आगे तुम 50 पर, अब कौन सा क्रम हुआ, अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर। एंगल एक्चुअली हमारा गवर्नमेंट स्कूल है और हमें सब कुछ हिंदी में ही पढ़ाना होता है। हमारे बच्चे इतने एजुकेटेड नहीं होते कि हम उनको इंग्लिश में पढ़ाएं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको उनकी भाषा में ही हम बच्चों को पढ़ाएं। वैसे हम कोशिश भी करते हैं कि उनको इंग्लिश की क्लासेस भी देते रहते हैं, तो करते हैं कोशिश बेटर करने की। That was great, and I think a practical solution to overcome the fear of maths. And I think sir, maths की कोई भाषा नहीं होती, maths की अपनी ही एक भाषा होती है, भले वो हिंदी में हो या हम लोग इंग्लिश में वर्ड्स को बोले, but it was so inspiring and so we can relate to the video so well. Thank you, ma'am. Here is our next question to you, Arindam sir. We see nowadays academic assistance centers are mushrooming day by day, which is taking away a child's self-study hours. How does self-study or self-reflection play a major role in the learning process of a student? Oh, yeah, I think that's a very valid question that you've asked. Uh, See, the self-study part, I always feel that it is more like an incubation. Like, for example, if I am in a classroom and my teacher has taught me a particular concept, I need to see to it that incubates in me so that I can actually grasp it completely. Now, when will that happen? When I go back and do a self culture of that particular aspect that my teacher has taught me, right? If that is the case, then only the possibility of me not only learning but also mastering it is possible. How much I listen from, whether from my teacher or from a YouTube or from any of the sources. Are you talking about academic assessment assistance through tuition centers or whatever? Until and unless I do not sit with the concepts, work with it, it's not going to happen. And another thing which we all know, that when we're talking about skills, skills can only be mastered when we practice it.
when I do it and when I do a culture of it, then only I will be able to, master that particular aspect. And mathematics is associated with skills. It's a skill associated subject. So keeping that in mind, it is so important that I first do a one-to-one with the particular subject, and then only I will be able to associate it and, not only master it, but also imbibe it within my system. And that can only happen when there is a self-learning process. So the more I would suggest, in fact, tell my students that the more you spend time with mathematics, the better it is for you. You do not need an external source. Of course, the external source is only to develop that concept, to enrich the concept, but to imbibe it, put it in your system, is what you need to do one to one. And that is only possible when I and my notebooks or my concepts work together. So that's what my take is, and that is why that the concept of, having homework. Now, why do we have homeworks? So that I can actually recall whatever my teacher has taught in that 40 minutes period or 50 minutes period or 1 hour period. I can recall that, reinstate it, and see to it that I imbibe it, right? And that is why this culture of having homework and sitting with the book is important. So self-learning is most important. If I need to master the skill, if I need to master the concepts or the knowledge, then I need to have the self. We can have n number of external sources, external support, but until unless I do not do it within myself, it's not going to work. So I think it's a very valid question that you asked, that learning process within ourselves is very, very important. Yeah. Absolutely true, and we can relate it so well. And next, we move on to Mohit sir. Sir, this question is for you. According to you, which teaching learning equipments can make math interesting for young learners? Can you show some example as well? या आई विल शो मेनली हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा इक्विपमेंट बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो बच्चों के लिए फेवरेबल हैं और जो मैथ्स को इजी भी बनाते हैं। कुछ इक्विपमेंट जो होते हैं मार्केट में मिलते हैं, बने बनाए रेडीमेड मिलते हैं, जो हम क्लासरूम में चार्ट्स की फॉर्म में हैंग कर देते हैं। और कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो पेंटेबल होते हैं, जो हम वॉल्स पे पेंट कराते हैं, जिससे बच्चों की मेमोरी में वो फीड हो, बच्चे देखते रहते हैं, विजिबल रहता है वो, तो विजिबल एड्स हो जाता है वो। और कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो नेचुरली जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे इफ वी टुक एन एग्जांपल ऑफ ए क्लासरूम, और हम बच्चों को मैथ्स पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो क्लासरूम से ही हम मैथ्स की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, वो रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, स्क्वायर शेप भी हो सकता है, तो उससे शेप का पता चल रहा है। क्लासरूम की वॉल्स जो हैं हमारी, वहां से हम बच्चों को शेप्स की जानकारी दे सकते हैं। हमारे स्कूल्स में पेड़ लगे होते हैं, तो बच्चे काउंट कर सकते हैं कितने पेड़ हैं वहां पर। तो बच्चों का नेचुरल ही हम नेचर से ही हम मैथमेटिक्स की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि एक मैथ्स का फोबिया उनसे दूर रहे। तो एक होते हैं नेचुरल, एक हमारे मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, एक पेंटेबल, और एक सेल्फ मेड टीचिंग इक्विपमेंट होते हैं जो हम खुद बनाते हैं बच्चों के लिए, ताकि हम अपने टॉपिक को इजी कर सकें, एक वेल मैनर्ड में हम बच्चों के सामने उसको रख सकें, ताकि वो टॉपिक हमारा इजी हो जाए। मैं एक सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वीडियो हम प्ले करें, उसके बाद मैं आपको कुछ टीएलएम्स दिखाऊंगा, जिससे हम अपने टॉपिक को बहुत ही आसानी से हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो कैन वी प्ले द वीडियो प्लीज? जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करेगा। देखिए यहाँ पे नंबर लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 2, इन दोनों को हमें जोड़ना है, और हमारे पास कंचे है, तो हमें 5 जोड़ना है, तो हम इसे 5 कंचे डालेंगे। 1 2 3 4 5, ये हमने 5 कंचे डाल दिए। अब 5 में हमें 2 जोड़ना है, यहाँ पर हम 2 कंचे डालेंगे, 1 2। जो हमने कंचे डाले वो सभी हमें बाउल में मिल चुके हैं। अब इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इससे बच्चा जोड़ की अवधारणाओं को आसानी से समझ लेगा। तो जोड़ की अवधारणा, तो ये तो था हमारा एडिशन के बेसिक कंसेप्ट। स्टार्टिंग में हम बच्चों को एडिशन कैसे सिखाएं। अब हमारा एक टॉपिक होता है एंगल्स का। हम क्लासेस में इज इट विजिबल? यस सर। या दिस इज द सेल्फ मेड टीएलएम जो मैंने बनाया है। यहाँ पर देखिए मैंने डिफरेंट एंगल भी शो किए हैं, एंगल्स टाइप। एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल, यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल, उनकी मतलब एंगल्स के बारे में मैंने यहाँ पर बच्चों को हम डिफाइन भी कर रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर ये टेलम हमारा वर्क करेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों को हम यहाँ से घुमा रहे हैं, और ये हम जैसे हमने यहाँ पर 50 पर रोका, तो बच्चे यहाँ पर इजीली चेक करेंगे सर ये 50 डिग्री का एंगल बन गया है। तो अब हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये एंगल यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कौन से एंगल से मैच कर रहा है। तो बच्चे इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्यूट एंगल है। इसी तरह हम इसको रोटेट करेंगे। हम रोटेट कर कर यहाँ पर 90 पे भी रोक सकते हैं, तो बच्चों से पूछेंगे कितने डिग्री का एंगल बन गया है, ये कौन सा एंगल है। तो इसी तरह ये कंप्लीटली टीएलएम वर्क कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर हम बच्चों को एंगल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं इस टीएलएम की हेल्प से, और बच्चे इसको माइंड में फीड भी कर लेते हैं कि ये एंगल, बच्चे ध्यान रखें एक्यूट एंगल ये होता है, राइट एंगल ये होता है। इसी तरह मेरे पास और भी टीएलएम्स हैं, मैं दिखा चाहता हूँ। ये देखिए ये केवल सिंपल हमने एक ब्लैक पेपर पर हमने 2 कप्स लगाए हैं, और ये 2 हमने यहाँ पर स्टिक्स लगाई हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बच्चों को, यहाँ पर हम 2 नंबर डालते हैं, एक नंबर हमने यहाँ पर डाला, और ये हमने एग्जाम्पल कर लिया, ये नंबर यहाँ पर डाल दिया। तो 1 इज 18 एंड 1 इज 34। तो यहाँ पर हम बच्चों से पूछते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, और बच्चे कंफ्यूजिंग होते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल कहाँ लगाना है, लेस देन का सिंबल कहाँ लगाना है, इक्वल टू का सिंबल कब आएगा। तो उसके लिए मैंने एक बेसिकली सिंपल एक फंडा बनाया है। हमने क्रोकोडाइल के फेस का एग्जांपल हम बच्चों को रिमाइंड कराते हैं, या चिड़िया की चोंच। एक चिड़िया की जो चोंच होती है वो इस फॉर्म में होती है, सभी को मालूम भी है। क्रोकोडाइल जब भी मुंह खोलेगा तो वो इसी तरह खोलेगा। तो हम बच्चों से पूछते हैं कि अगर एक एक दो आपके पास ढेर हैं, एक जगह ज्यादा है और एक जगह कम है, तो क्रोकोडाइल कहाँ जाएगा पहले। तो क्रोकोडाइल बच्चे बोलेंगे ज्यादा पे जाएगा। तो जैसे ही ज्यादा पे जाएगा तो जो मुंह है, जो चोंच है, वो ज्यादा की तरफ खुल जाएगी। तो बच्चों के अंदर एक परमानेंटली फीड हो गया कि ये जो है चिड़िया की चोंच बच्चे याद रखते हैं, मगरमच्छ का मुंह याद रखते हैं, कि जहां भी ज्यादा नंबर होगा वहां हमें चोंच बनानी है, वहां हमें मगरमच्छ का मुंह बनाना है। तो बच्चों को एक बेसिकली एक कंसेप्ट उनके माइंड में फीड हो गया। तो अब ये कंसेप्ट बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। हमने इक्विपमेंट के हेल्प से पढ़ाया, बच्चों के अंदर एक परमानेंटली उनके माइंड में फीड हो गया कि हाँ ये कंसेप्ट मैं नहीं भूल पाऊंगा। अब देखिए जैसे ये मैंने ये बनाया है, यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर लिखा भी है, ये नंबर्स के लिए है कि नंबर फॉर्मेशन बच्चों को समझाने के लिए, और बच्चों को प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इन सब की जानकारी देने के लिए। अब देखिए यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000 यहाँ पर हमने ऊपर लिखे हैं। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, 10,000, करोड़, लाख, जहां तक भी हमें बनाना है वहां तक बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर नंबर चेंज भी कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ ये नंबर कौन सा बन गया। तो बच्चे यहाँ पर ऊपर से पढ़ेंगे कि कौन सी पोजीशन पे है, और बच्चे यहाँ पर उसको इजिली इस नंबर को पहचान लेते हैं। यहाँ से बच्चों को प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और नंबर फॉर्मेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो और भी बहुत सारे टीचिंग इक्विपमेंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ये मैंने कुछ ही इक्विपमेंट्स अपने दिखाए हैं और बच्चों के सामने शो भी किए हैं। बच्चे आसानी से इस चीज को सीख लेते हैं और अपने मन में कभी भी नहीं निकालते। जी, That was out of the box thinking. So very, very impressive. थैंक यू मैम। Okay, Arindam sir, the next question is for you. Your workshops are very enticing and informative. It gives enough food for thought for teachers to prepare effective lesson plans. Can you give us a few tips how to make the classroom environment vibrant and engrossing? This is very, very important. I belong to this tribe of mathematics teachers, but then there are a lot of problems that we associate ourselves with. The most important thing the teacher, maths teacher, should understand that, as Mohit ji has already mentioned, that mathematics is a subject that human being can connect to because it is within us. The other subject, whether it is language or something like that, you need to imbibe and learn. But this is something which maybe I can talk about that a little later. But what I'm saying is that's what, as a maths teacher, we need to believe in. And what we generally do is we make it so serious. And there's a small little joke like I have also been to schools, maybe for inspection or for something. Like if you see the teachers in this class in the school, you can easily identify who's the maths teacher. The fellow with the straight face, absolutely strict, no smile in his face, is the one who is teaching maths. Okay, so that attitude needs to be changed. That's the most important aspect. The second thing is I always feel the maths teachers should know few jokes.
which actually they can crack in the class. Until unless you don't do that, you cannot make the situation lighter. And the third is that make the students believe that what I am learning is already there in me. And one of the simple example, let me give you. In fact, of course, Mohit ji is doing a brilliant job, and congratulations to you. And the way he's designed this indigenous maths material is really really amazing, and that's what our teachers should actually do. Another aspect which I would like to talk about, and always talk to maths teachers about it, is the method of discovery, where you discover that you already know about it. Like for example, I remember in sixth standard or seventh standard, maybe we there's one property of circle, which we call it as pi. Okay. Now, generally, what teachers do is they say pi and pi is equal to 22/7. But this is something which is absolutely crazy. Crazy. That's not what it is, right? Pi basically is representing a ratio. Pi is representing a ratio. When you have a circle, in the circle, the circumference and the ratio between the circumference and the diameter is what is the represented, and pi actually is a Greek alphabet, which is actually representing this ratio. Now, instead of doing that, if I ask my students to draw 3 circles and I give them the diameter, one, or give them the radius, one may be 2 centimeter, another may be 5 centimeter, the third one may be 7 centimeter radius, and let them draw all the 3 lines, all the 3 circles. After that, if I tell them to take a thread and measure the circumference and write them, okay, when they take the thread and measure the circumference and write them, then I ask them to divide the circumference and the diameter. They already know the diameter, and then when you task them to observe, they'll be surprised. Oh my God, all the 3 circles are different, but their value is the same. Same. So that means, that comes to the inference that how big a circle is. Whether the circle is small as a micromillimeter or as big as a kilometer, it will always have, the ratio will always be similar. So ratio will always be common, right? If that is and that's what the method of discovery is all about. So if we do that, then what happens is automatically a student can connect himself or herself to that particular concept that he himself has discovered, she herself has discovered. So what I mean to say is, if we can actually associate the concepts, and it's just one example, there are n number of examples that we can write from standard 1 to standard 12th, or maybe in the higher level also in that case. So if we can associate that, then what happens? The connectivity towards the subject, why are children, like with my little knowledge about mathematics and my understanding towards the students' mathematics, is that why are they fearful about it? Because they can't connect themselves. When they can't connect themselves, that's where things go wrong for them. And then they think they alienate themselves from that. And when they alienate themselves, they show their disinterest. Right. And there is one string that can connect mathematics with the student, that is the teacher. And if we have a teacher like Mohit ji, then I'm sure my students will definitely, any student will never be afraid of mathematics. That's my take. And that's what I always try to tell the teachers. Yeah. That's wonderful, sir. All the maths teachers who are there in the talk show today, I'm sure they're going to smile a bit more Monday onwards at school. And your answer, the example, what you quoted of the circle, 3 circles, when we compare the ratio, it's a wonderful, I think, example, what you've quoted. I'm sure I'm going to try that in my classroom. Thank you, sir. Mohit, sir, the next question for you. Yeah, ma'am. We know that learning math is always enjoyable for math lovers. How will you introduce topics like HCF and LCM for lower grades? Yeah. As I told you earlier that maths is not a fearful subject. Math is a playful subject. मतलब हम मैथ्स से फेयर नहीं करना है, हमें एक मैथ्स को एक खेल में अपने मतलब अच्छे से उसको समझाना है. और एलसीएम एचसीएफ की बात करूं तो मैंने उसके लिए एक वुडन ब्लॉक पर कील होती है, नेल्स जिसको हम बोलते हैं, कील से हमने एक मॉडल बनाया है जिसकी कॉस्ट आई थिंक 0 इन्वेस्टमेंट वो है, 5 या 10 रुपए उसमें हमने बनाने में लगाए हैं.
और वो इतना इफेक्टिव है एलसीएम एचसीएफ के लिए। मैं वीडियो भी प्ले करूंगा, तो बच्चों के एक परमानेंट बच्चों को माइंड में फीड हो गया एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट, और वो बच्चों से कभी मतलब बच्चे कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। कैन यू प्ले द वीडियो प्लीज? एलसीएम और एचसीएफ का एक वर्किंग टेलम बनाया है। इसकी मदद से हम एलसीएम और एचसीएफ के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पर नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 23 तक नंबर लिखे हैं हमने। और ये कील लगाई है और हमने कुछ रबड़ रखी है। अब इनके हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे एलसीएम। किन्हीं भी नंबरों का एलसीएम निकाल सकते हैं हम, 2 संख्याओं का भी, 3 का भी, 4 का भी। चलो कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 2 और 4, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम सम अपवर्तीय। सम अपवर्तीय। तो सबसे पहले हम अपवर्तीय निकाल लेंगे, फिर सम अपवर्तीय निकाल लेंगे, और फिर देखेंगे इनमें सबसे छोटा कौन सा है, लघुत्तम। ठीक है, तो 2 और 4 का जो है हम अपवर्तीय निकाल लेंगे। अपवर्तीय क्या होता है? दी गई संख्या को जब हम प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हैं तो अपवर्तीय निकाल लेते हैं। जैसे 2 है तो 2 की गुणा सबसे पहले 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 की गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 4। 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6। 2 की गुणा 4 में 8। 2 की गुणा 5 में 10। 2 की गुणा 6 में 12। 2 की गुणा 7 में 14। और 2 की गुणा 8 में 16। इस तरह हम आगे भी कर सकते हैं। अब हमें किसका निकालना है? 4 का। तो 2 की गुणा 4 की गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 4 की गुणा 2 में 8। इसमें हम रबड़ लगा रहे हैं। 4 की गुणा 3 में 12। और 4 की गुणा 4 में 16। आगे भी कर सकते हैं। अब हमने अपवर्तीय निकाल लिए। अब हम देखते हैं सम अपवर्तीय कौन कौन से हैं जिसमें दोनों में रबड़ हो। जिस नंबर पे यहाँ पर 2 रबड़ है, यहाँ पर 2 रबड़ है, यहाँ पर 2 रबड़ है, और यहाँ पर 2 रबड़ है। ये हमने सम अपवर्तीय निकाल लिए। अब हमें निकालना है एलसीएम, लघुत्तम सम अपवर्तीय। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 4, 8, 12 और 16 में सबसे छोटा क्या है? 4। तो 2 और 4 का जो एलसीएम है वो क्या है? 4। दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटा सम अपवर्तीय होगा वो उन संख्याओं का लघुत्तम सम अपवर्तीय कहलाएगा। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम सम अपवर्तक। क्या बोलते हैं? सम अपवर्तक। महत्तम सम अपवर्तक। और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं, उनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। चलो 4 और 6 का निकालते हैं। 4 और 6 का। अब 4 किस किस से विभाजित होता है? 4 1 से विभाजित हो सकता है? यस सर। तो सबसे पहले हम अपवर्तक निकाल रहे हैं, फिर निकालेंगे सम अपवर्तक, और फिर देखेंगे महत्तम सम अपवर्तक क्या होगा, जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा। 4 1 से होता है, 2 से हो जाएगा? यस सर। 3 से? नो सर। और 4 से? यस सर। वेरी गुड। अब 6 बताओ, 6 किससे होगा? 1 से हो जाएगा? यस सर। 2 से? यस सर। 3 से? यस सर। 3 से हो जाएगा? यस सर। 4 से? यस सर। 4 से नहीं होगा। 5 से? नो सर। और 6 से? यस सर। वेरी गुड। अब हमने 4 और 6 के अपवर्तक निकाल लिए। अब हम देखते हैं सम अपवर्तक कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर 2 रबड़ है, यस सर। यहाँ पर 2 रबड़ है, यस सर। और इनमें 1 1 है। तो 1 और 2 इसके सम अपवर्तक हैं। 1 और 2 सम अपवर्तक हैं। अब हमें निकालना है महत्तम सम अपवर्तक। दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ा सम अपवर्तक होगा वो उनका महत्तम सम अपवर्तक कहलाएगा। तो 1 और 2 में बड़ा क्या है? 2। तो 4 और 6 का जो एचसीएफ है वो क्या है? 2। आया समझ में बच्चों? yes, अब क्लियर हो गया डाउट? एलसीएम एचसीएफ का डाउट क्लियर हो गया? देखो बच्चों, तो ये एक वुडन ब्लॉक की हेल्प से मतलब 0 इन्वेस्टमेंट है, और हमने बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। क्योंकि हमारे पास देखो क्या होता है मैम, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, रिसोर्सेज हमें खुद बनाने पड़ते हैं। तो ये मैंने खुद से ही सोच के इसको वुडन ब्लॉक पे कील के माध्यम से बनाया, ताकि बच्चों को हम ये कंसेप्ट एलसीएम एचसीएफ का आसानी से समझा सके। क्योंकि मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी एलसीएम एचसीएफ बच्चों को समझाने में, और इससे बनाने के बाद बच्चों को इजीली हमने ये कंसेप्ट क्लियर करा दिया। So video is a बहुत बढ़िया वीडियो, एंड आई थिंक
if we can implement in our classrooms, even we can make the concept of HCF, LCM very easy for them. It's wonderful. So it's so much to learn from you. The fourth Here is the question next coming up. question to, yes, here's the next question coming up for Arindam sir. How can a high school student get rid of the fear of numbers? Yes, this is a universal question and has been doing right from the time when, when mathematics must have been born in an academic form. So fear is a factor, the reason that I could identify in the lower classes, in the higher classes, it's a little different than one and two. Like for example, in higher class, if you look at it, there are the fear happens when there is a gap in learning. And the gap in learning, for example, if I am sure many of you will be identifying with this example. A child might be studying in ninth standard or or eighth standard, or I have seen in UG level also students. When you ask them to add two fractions, they falter there. Like if you say 3 upon 5 plus 2 upon 7, they will add 3 and 2 and they will add 5 and 7, right? So Yes. where is the problem? The problem is the gap. The gap, what is the gap? The gap is of inability to identify the difference between a whole number and a fraction. How is the student treating the addition? The treating the addition just like the way he's adding two natural numbers, right? Whereas in a fraction, the addition is completely different. A fraction is a part of a whole, as we say. So that means that gap is already there in the student. And how did this gap happen? Because the student did not understand the concept of a fraction, right? And when this associated concept is not there, that's where the gap happens. And this leads to multiple problems. Not only because this fraction comes in the form of a decimal also, because decimal is in the form of a fraction, and then it goes to the algebraic expressions as and when the students move. So this problem keeps on happening. And when this happens, that's where the lack of information or the lack of knowledge because of the gap is what the fear factor works in. So because what happens, the student, now this problem might have been there in standard 3 or standard 4, whereas the child has come to 9th standard. You cannot expect a 9th standard teacher to rectify that gap. So that is why it is so important that if we can do in every class a gap analysis program, like if we can have a scaffolding program where there is a testing of concepts, that like once I suppose I am from third to fourth, I am going to standard 4, and just after, as soon as I come to standard 4, if I undergo a gap analysis program where my teacher tries to understand whether my important major concepts that I should know in standard 3 is there or not, if I am able to associate that, if I am able to apply it, those concepts, if I'm able to do that or not, if my teacher can identify and fill in the gap, that particular program, then automatically this problem will definitely go away. So this gap analysis is a very, very important aspect, which I feel, and that leads to the fear factor in the senior classes, as I'm talking about. This is one major reason. Another reason is the lack of practice. In fact, I remember one of the questions that you've asked me, how important is the self study, and that lack of self study is also very important. The more you experience, how do you experience when you practice sums, especially in the senior classes? Suppose you're practicing the same concepts. Every concept has got different types and different levels, right? So if I can practice every type maybe 20 times or 30 times the same, then what happens is automatically I will develop an experience. What does my experience tell me? That okay, this way I may go wrong and this way I will go right.
So I will know how things go wrong, because every time I practice, I will also make a mistake. Now, from my mistake, I'm going to learn. I will be able to rectify it. I know where things have gone wrong for me. So next time when I apply that, I will know that, okay, this way, if I do it, things might go wrong. So that's the experience that I get. And with that experience comes the academic, comes the, cognitive maturity, as we say in students. And that cognitive maturity will help a student to excel and cut off the fear. So the fear aspect is also a lack of practice. So these two are, of course, there can be other factors, but these two factors are very, very important. Another thing is that we sometimes, we sometimes label the students. Not only we, not only teachers, I'm talking with society at large, parents also. Okay, he's not good in maths or he is good in maths. This is nothing like that, right? I have seen students who do very well in algebra, but somehow they do not manage the spatial skills. Because of the lack of spatial skills, they might not be good in geometry. So it is also like that. Both are math, though both are the branch of mathematics branches. But in one I do well, another one, that's absolutely fine. That doesn't mean I should be labeled as I am weak in mathematics or something. And what happens is when people start telling me, oh, tum to, aap to, like maths mein weak ho to, and what happens? I start believing that it is. And when that happens, I start alienating myself from the subject. So that is also another reason. But the most important two reasons is, one is the gap that is developed in the lower classes, which is still there in me, and that gap has become a yawning gap, becomes difficult for me to rectify them or stitch them. And the second is the lack of practice. If these two are being done, I can guarantee you the confidence level, especially with the practice, amount of practice that the students can do, the confidence level will definitely go up, and the fear will also go away. And that's what I always say. In 10th standard, you're preparing for board. 11th and 12th is a different ball game altogether, but in 10th standard, you should do minimum around 10 to 12,000 sums. If you have done that, then I can assure you that nobody can stop you above 90. I can definitely assure you. And if you're thinking that you can do more than 5,000, then nobody can stop you before, above 70. So that's the gradation that I always look at. But yes, it is very important. See, there are certain things which are associated. One is I understand the concept. Second thing is I know how to apply. And how will I know how to apply until unless I do not practice? Because when I'm applying a concept, I need the skills are the tools for me to apply. So I should know which is the right tool to apply a particular concept. Like, for example, if you ask me to cook, I cannot use a hammer or a chisel to cook. That's the wrong tool that I'm using. So I should know which is the right tool that I use for a particular concept. So how will I do that? When I am actually into a practice, and then only I will be able to apply, learn, make mistake, learn, apply, and then only I'll be able to do it. So I think if these aspects have been taken care by students, then I'm sure the fear factor will be there. Thank you so much. Thank you, sir. That was amazing. We should inculcate love for the subject rather than the fear of it. And we have the next question to Mohit, sir. For the children who are appearing for board examination, both grade 10 and 12, what technique would you suggest for effective and quick recapitulation? Yeah. As I told you earlier, that math is not a fearful subject. Math is a playful subject. तो क्या होता है, समटाइम्स एक बोर्ड का फोबिया होता है कि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा डिफिकल्ट होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो मैं कहना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स से कि इसका फोबिया मत बनाएं. इट्स जस्ट एन एग्जाम. उसको एग्जाम की तरीके से ही लें. और ज्यादा अगर माइंड के हम उसको फोबिया बनाते हैं तो वो फिर हमारे लिए एक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करता है. तो मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना स्ट्रांग बनाएं कि कुछ भी पेपर आ जाए उसको हम कर देंगे क्लियर. तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स पर बच्चों को फोकस करने की जरूरत है. एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक प्रॉपर टाइम टेबल मैनेज होना चाहिए बच्चों के लिए. अगर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो टाइम टेबल बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी 5 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है और मैं 10 घंटे का टाइम टेबल बना रहा हूँ, तो वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा. अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग बच्चे अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं. अगर बच्चे की कैपेसिटी 6 आवर्स पढ़ने की है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना टाइम टेबल बनाए.
तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं। और मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट मेमोराइजिंग। यहाँ पर हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है। तो कंसेप्ट्स को हम अच्छे से फोकस करें अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको समझें, उनको रटे मत। और दूसरा हमारा पॉइंट है फॉर्मूलाज। मैथ्स में अगर हमारे फॉर्मूलाज टिप्स पे हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं भी आते, मतलब हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, अगर हमारे फॉर्मूलाज हमारे टिप्स पे हैं तो हम उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इवन बोर्ड फोबिया के लिए हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी एक कार्यक्रम मन की बात हर महीने हम उनको सुनते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे वो स्पेशली एक सेशन कंडक्ट करते हैं, बच्चों को समझाते भी हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम से डरना नहीं है, इसका कोई फोबिया नहीं बनाना है। तो मैं बच्चों को एक गुजारिश भी करूंगा कि बच्चे उस प्रोग्राम को भी जरूर सुने। और रिसेंटली एक नया प्रोग्राम कंडक्ट हुआ है, परीक्षा पे चर्चा बाय पीएम श्री नरेंद्र मोदी। तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी, हम उनको सुनेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे। तो उसमें भी वो बोर्ड एग्जाम्स पर ही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह हम इस फोबिया को ओवरकम करें, किस तरह हम इसको फेस करें, और किस तरह हम बोर्ड एग्जाम्स को एक इजी बनाएं, इसको फोबिया ना बनाकर उसको एक इजी टास्क बनाएं, ताकि बच्चे आसानी से उसको अच्छे से क्लियर कर सकें। It is indeed a need of the hour, sir, which can help our students and teachers equally. Thank you, sir. Arindam sir, the next question for you. Problem solving skills is the mother of all skills. This concept is deeply embedded in the subject mathematics. How can students use problem solving skills for their academic enhancement, sir? Yes, of course, as you said it rightly, problem solving skills, the mother of all skills. Because finally, all the skills, whether right from the numeracy skills or computational skills, which is the basic skills, if you bring them all together, if you make a pyramid out of them, and if you take them all together, finally they all lead to support the problem solving skills. So that's why problem solving skills, the mother of all skills, is absolutely true. Yes, and the most important aspect is applying, not only applying the skills, but also associate and understand what that particular skill means to me and how does it help me out. Like for example, if I say, let's look at one of the vital skills for mathematics is the manipulative skills. Now, how do I use the manipulative skills? Like if I say that, a simple example is in ninth standard, I think in 10th, ninth only we do this, like, prove that root 2 is a rational number. This is a very beautiful example of manipulative skills. So we start with the statement saying that let root 2 be a rational number. And we prove that statement wrong. That's a very good way of manipulating the entire associated statement, and then prove it wrong and say that, okay, if this statement is wrong, then the other side is right. So now how did I use this particular skill? How did I use it? If I can understand that, then what will happen in a similar situation, I'll be able to apply that particular skill. Okay, like another example of manipulative skill is any of the linear equation or any of the equations. When we are balancing the equation and when we are solving it, like for example, if it is 2x plus 5 is equal to 9, then I need to take the 5 towards to the left hand, to the right hand side. Now, how do I do that? How do I remove that 5? So plus 5 means if I put a negative, then it will negate. So with plus 5, I do a minus 5 in the left side. Whatever I do in the left side has to be done in the right side. Nahin to taraju balance nahi hoga. So if I do it in the right side, so it will be minus 5 will also go in the minus 5, and this plus 5 minus 5 gets negated in the left hand side. So that's also another part of the manipulative skill. So what I'm saying is getting aware of the working of skills is also very, very important. I'll give you a very good example which Mohit ji had actually brought in just before this question. He was talking about the formula. Application of formula is so important. That's part of my skill. How do I might be having a particular concept, might have n number of formulas, but which one to apply in which situation, is very, very important for me to understand. And that is the crux of problem solving skills. So I have a feeling if you want to, if any of us want to make a
approach towards problem solving skill is to be aware of the other skills, to understand how to apply all these skills in situation. And the third most important thing is to how to conglomerate that with the other skill. Like for example, if I am saying the skill of numeracy, how do I connect that to the maybe the computational skill, or maybe a what do you call it, quantitative skill? How do I associate and connect that with the others? So a network of skill is also very important for me to understand. So these three Absolutely. things, I think, if you know, then definitely problem solving skill you will be able to master. It's a beautiful way, sir, you have interpreted problem solving skill, how it's deeply connected to mathematics. I think it's an eye opener for all of us. Beautifully said, sir. Thank you. Here is our next question to you, Mohit sir. Yeah, ma'am. Very few people give back to the society. You're one of them. What inspired you to educate and spend time with children with limited resources? Actually, I'm just saying कि I'm just doing my duty right now. अभी जो सरकार ने हमें काम दिया है हम बस उसको फॉलो कर रहे हैं. और टुडे आई एम लर्निंग अ लॉट मच फ्रॉम मिस्टर अरिंदम सर. ही इज ब्रिलियंट इन हिज फील्ड. एंड और मैं कहना चाहूँगा कि सर का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आज उसको ग्रहण कर रहा हूँ अपने अंदर, ताकि मुझे काम आए मेरे आने वाले समय में. अरिंदम सर, यू आर वेरी ब्रिलियंट सर. थैंक यू I सर. think it is it's reciprocal for both of us. नहीं नहीं no, sir. मैं भी बहुत कुछ It's सीख not रहा हूँ आपसे. reciprocal. Basically, मैं कहना चाहूँगा कि I am an accidental teacher. I'm not a teacher by born. I completed my BTech in computer science branch, and then I joined an IT company. I worked there for 2 years. But after a family incident that bring me back to home, or then I decided to go for government job. तो जब मैं जॉब में गया और मैंने देखा वहां पर गरीब बच्चे देखे मैंने, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं उनको नसीब होती. अगर उनको हमारे स्कूल्स में मिड डे मील बनता है तो कुछ परिवार ऐसे हैं जो केवल बच्चे जो मिड डे मील के भरोसे ही हैं, उनके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं और वो इतना नहीं कमा पाते. इवन गवर्नमेंट की तरफ से विंटर्स में स्वेटर मिलता है, तो उनकी हालत इतनी खराब है फाइनेंशियली, वो बच्चे ड्रेस के स्वेटर में ही रात को सोते हैं, उसी स्वेटर में वो स्कूल आते हैं, वो पूरी विंटर्स वो स्वेटर पहन के रखते हैं. तो दैट इज वेरी पेनफुल फॉर मी. मुझे बहुत एक पेनफुल, मेरे अंदर से एक ऐसी आवाज आई कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए. ये बच्चे डिजर्व करते हैं अच्छी जगह पे पोस्ट करना, इनको बड़े होकर कुछ बनना ये डिजर्व करते हैं. तो देन आई स्टार्टेड विद द थॉट दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो आई जस्ट स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट. मैंने एक शामली में, हमारा डिस्ट्रिक्ट शामली है, मैंने एक टीचिंग इक्विपमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और आज लगभग मोर देन 500 स्कूल्स में सब टीचर्स टीचिंग इक्विपमेंट की हेल्प से बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं. तो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग इक्विपमेंट. क्योंकि टीचिंग इक्विपमेंट्स की हम बात करें तो बच्चे इजिली हमारे कंसेप्ट को समझ लेते हैं. हमें बच्चों को समझाने में इतनी प्रॉब्लम हम नहीं महसूस करते. टीचिंग इक्विपमेंट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. और मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि इस तरह हम रास्ते पर अकेले ही चल पड़े, पर देखते ही देखते कारवां बनता चला गया. तो मैं इसमें अपनी वाइफ को भी उसमें श्रेय दूंगा. उन्होंने, मेरी वाइफ ने बड़ी हेल्प की, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे टीचिंग इक्विपमेंट बनाने नहीं आते थे. और माई वाइफ इज वेरी गुड इन क्राफ्ट, इज वेरी गुड इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट. तो उसने मेरी बड़ी हेल्प की और जिस वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया. और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जब हम गरीब बच्चों के लिए कुछ करते हैं ना, और उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल, छोटी सी मुस्कान जब हम देखते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है. सबसे बड़ा सम्मान वही है जब हम गरीब बच्चों के लिए कुछ करते हैं. इवन मैं अपनी सैलरी से हर मंथ उनके लिए कुछ ना कुछ अपने स्कूल्स को डोनेट करता हूँ. कल भी रिपब्लिक डे है और कल रिपब्लिक डे पर मैं अपने स्कूल को एक लैपटॉप गिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को हम कंप्यूटर के कंसेप्ट समझा सकें. क्योंकि आने वाला जो वक्त है, ये टाइम है, ये सब मोबाइल टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, और हमारे विद्यालय में इससे रिलेटेड कुछ नहीं है. तो मैं अपनी सैलरी से बच्चों को लैपटॉप कल गिफ्ट कर रहा हूँ. तो हमारे लिए एक बड़ा ही सेटिस्फैक्टरिंग होता है कि जब हम बच्चों की स्माइल देखते हैं, बच्चों के लिए कुछ करते हैं जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं. गरीब बच्चे डिजर्व करते हैं कि
उनके लिए हम कुछ करें, तो वो मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी होता है, और यही मुझे इंस्पायर करता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। दैट्स वाई आई स्टार्टेड माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। मैं वहां पर भी मतलब वीडियोस अपलोड करने शुरू किए, ताकि जिन बच्चों तक नहीं पहुंच पाए, तो काश हम किसी बच्चे के लिए कुछ तो कर सकें। धन्यवाद। Sir, a big salute to you, sir, for all your thoughts and actions. And, as rightly said by you, where there is a will, there is a way. It is a noble deed which we all can incorporate in our lives. Thank you so much, sir. So with this, we come to an end of question answer round. Now, dear guests, we have our students with us who will be conducting the rapid fire round. Now over to Rishabh for rapid fire round with Arindam, sir. Thank you so much, ma'am. All right. Get ready to ignite the room with adrenaline as we dive into the ultimate rapid fire challenge. In this fast paced game, wit and promptness collide for an electrifying experience that will leave you on the edge of your seat. So brace yourselves for the thrill of the game that's about to set the room on fire. Arindam, sir, my first question for you is, what is the most critical and useful math skill according to you? I have a feeling that there is nothing called a critical math skill. All skills are important and all skills are equally valued. Like if we look at the basic skills, if we talk about the computational skill, which is a very basic mathematics skills, if we do not know that, we will not be able to do a critical thinking skills, a higher thinking skill, a skill where we analyze, where we maybe infer. Okay, so comprehending is as important as inferring. So all the skills are very, very important. As I said earlier, it's very important for me to know how to use it. So all the skills are important and all the skills have their due respect. Yes. Truly insightful, sir. Even I had thought of that. Me, myself being a math student, even I think that each and every skill is very important. Well, moving on. Sir, I've heard that you're musically inclined, and I'm sure there's a song that you feel relates to your love for math or actually relates to your life. Please do share it with us. Yes, of course, music is very close to my heart. And if you talk about a song that I remember now, which is directly connected, literally connected, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, that's one song which, but I remember on a lighter note, when I was in 12th standard, I had a friend called Pankaj, and both of us were avid maths practitioners, and we used to, both of us used to crazily practice mathematics. And when we suppose we have a very intricate sum and we have been working with that for almost maybe 15-20 minutes and we are not coming up with the answer, so we used to always sing this song, aja aja main hu pyar tera. So I don't know what magic that song used to do in us, that another 5-10 minutes when we start working, we used to actually get the answer to that particular problem. So that's how I can actually connect that. Both are That's on truly the light. lovely numbers. Both are Yeah, truly lovely numbers. Even I've heard of them from my parents, of course. And yes, there's another question for you. This is a rather interesting one, for which I'm eager to hear the answer. What is one quote that you live by? one quote that I live by. Yes, there is one very important quote and which very close to my heart, and I always stick to that. That is, it says that diamond is just another coal. The diamond is a family of coal, right? From carbon. Diamond is just another coal that did well under pressure. Wow. So any coal that comes under pressure. So I have a feeling that connects to the human, associated entity, because we as people, when we definitely come under pressure, we perform well. So that's there. So and that is something which I feel is which really inspires me. Truly lovely words. Like I'm sure every student can relate to it. It was very inspirational. Yeah. Moving on to our fourth question. Do you think math is an acquired skill or an innate one? Uh, it is definitely within us. Like Swami Vivekananda has talked about, the famous quote saying that education is the manifestation of perfection already in man. I have a feeling that we all have mathematics within us. Let me give you a small example. Like suppose you're walking through a lane and all of a sudden you see a pit, maybe a small pit. What will you do? You will just stretch your leg and go to the other side.
now suppose you're walking and then you see a pit which is maybe or 2 or 3 feet bigger, or so what will you do? You will jump. Okay. Now suppose you are seeing a pit which is little bigger than that. What you do is you run and then you jump. Right. Now, Yes, how sir. did we do that? We have an inbuilt calculus that has been fit into it to understand its trajectory. Like, how do I, if I need to cross it, what sort of momentum should I have? What sort of pressure that I need to create? What sort of force that I need to generate? Or in that case, what sort of speed I need to bring in? Right. So how do I know that? Because the entire thing is very much inbuilt in me. And this realization is very important for all of us, that maths is within us. It is just that we need to discover it. Right. True, sir. Yeah. True, sir. Lovely words. Yes. Lovely thoughts. Sir, could you please tell me who is your inspiration? Without any second thought, my parents, of course. Great inspiration. My mother, she was a very simple lady. She was a housewife, but what she has taught me is the values of life. The small example that I can give you, that I remember when the tea box, at that point of time when I was a child, the box used to come in the cardboard box that Brook Bond now also I think it comes. Yes. So when the box used to get over, she used to throw away the box. She used to fold her hand and say thank you to the box for serving. Like, for a small thing. I used to laugh at that point of time because I was very small. But later on, I realized that how important it is for us to value every small little thing that happens in our life. So that's something. So without undoubtedly, it's my parents who've always been whom I always looked up to. Yes. Quick and well said, sir. They truly play a pivotal role in our lives. All right, let's see if I can keep this streak going. I have one last question for you, sir. Which is your favorite travel destination? Oh yeah, I love traveling in India because I feel the variety that our country has. I don't think we have it anywhere. We also have a desert which is a cold desert where you have minus 24 degrees, and we also have a hot desert with almost 45 to 50 degree. That sort of a difference we have. We have the Himalayas, we have the ocean, we have the beaches, we have got yellow sand beach, we've got brown sand beach, you name it and we have it all. So I think and I cannot name one place because every part of it, whatever I've moved across the country, is really beautiful. So nothing better than our country, I feel. Yes, sir, Yes. true. Even I have made a promise that I'm not going to go abroad until I see each and every corner of our country because it's truly lovely. There's so much variety in our country, so much of culture. Absolutely. Well, I'll not keep you long, sir. Thank you so much for being an amazing sport. Now over to Chavi. Chavi, the spotlight is on you. Thank you Thank you, so much. Rishabh. God bless you. Thank you. Thank you, Rishabh. Sir, you are an inspiration for students and teachers alike. We just watched a few of your videos and were engrossed to see how these simple methods can help us understand math. Are you ready, Mohit, sir? If Yeah, I'm yes, ready. I will take the opportunity to begin the rapid fire round. Yes, yes, yes. For my first question, one word that reduces math phobia. Oh, one word. I think it's practice. Practice is the most appropriate word for reducing math phobia. Because as much as we practice maths question, it becomes easier for us to solve the questions. True, sir. Knowing what to accept broadly can certainly help students to cope with whatever challenges that they may face in the future. On to the next question. Your thoughts on learning math through online videos or models? या ऑनलाइन वीडियोस की अगर हम बात करें तो मुझे भी जब कोई टॉपिक किसी टॉपिक में डिफिकल्टी होती है तो मैं भी यूट्यूब और गूगल की हेल्प लेता हूँ, ऑनलाइन वीडियोस की हेल्प लेता हूँ, और मैं खुद भी जो डिफिकल्ट टॉपिक है उनकी वीडियो अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ ताकि बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनको हेल्प मिल सके। और मॉडल्स की हम काफ़ी बात कर ही चुके हैं कि बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पर मैंने आज 3 या 4 मॉडल ही शो किए हैं। मेरे पास करीबन मैथ्स के 50 to 60 मॉडल्स हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पर हैं और वो बड़े हेल्पफुल हैं बच्चों के लिए। Yes, sir. What an intriguing way to learn interesting facts about math. One tip to teach math to differently abled children? Yeah, if you talk about differently able children, then we have to plan activity according to their disabilities.
If we talk about mentally disabled, so then we have to planned activity those who are helpful for mentally disabled children. And if you talk about physically disabled, so we have to plan our activity according to their physical disability. So it's a difficult task to teach disabled children's, but we can do with the playful activities, with playful games. So it's very easy to teach them by playful activities. Your inspirational thoughts fuel positive change. Truly wonderful, sir. And for my fourth question, one book which inspires you, sir? Yeah, book. Okay. In context to math, Ramanujan, I read a book, Ramanujan, The Man and the Mathematician. It's written by S.R. Ranganathan. It's a good book. And one another book is Believe in Yourself. It's been based on Swami Vivekanand thoughts. So it's also a good book for me. And you can also try to read this book. These are very good books. Yes, sir. Both of them are my favorites too. Colorful teaching learning equipment creates a happy learning space. Do you agree, sir? Kindly show us a few interesting props that you use in the classroom. Okay, I'll show. Actually, I made a concept of happy classroom in my district, and it becomes very popular now in our complete state, Uttar Pradesh. Happy classroom concept is very popular nowadays. I will show you a video. Can you play the video, please? This is my classroom. Here you can see many teaching aids are on the walls. This is चित्रकारी बोर्ड. यहाँ पर बच्चे अपनी चित्रकारी बनाते हैं और यहाँ पर जिसकी अच्छी होती है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं. Actually, these kind of visual aids attracts the attention of our childrens. मतलब हम इससे क्या है मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट, मतलब हम कम इनपुट के साथ एक मैक्सिमम आउटपुट ग्रैप्स कर सकते हैं बच्चों से. तो दिस इज अ वेरी गुड concept of happy classroom. Sir, the models were just so wonderful, which excites young learners. And for my final question, sir, your all-time favorite movie? My all-time favorite movie, Three Idiots. And if I talk about maths concept, so I like Shakuntala Devi movie. I like the movie The Man Who Know Infinity. It's on the life of Ramanujan, the great mathematician. Indeed, those are some interesting ones, sir. Yeah. Thank you so much for being so sportive, sir. Your thoughts are a testament to the power of resilience and determination. Thank you, Charvi. Thank you. On behalf of the Math Department, Delhi Public School, Bangalore East, I would like to extend my heartfelt gratitude to Mr. Arindam and Mr. Mohit for being here with us today. Your passion and enthusiasm added a vibrant and captivating dimension to the event. First and foremost, I would like to express my sincere appreciation to our management, our principal, Dr. Manila Carvalho, and our vice principal, Ms. Preeti Suta. A big thank you to our head of department, Ms. Sirisha Chittur, for facilitating and planning the program. Heartfelt thanks to head of department of English, Ms. Sonali, and Ms. Sioni from the English department for their guidance and support. I express my gratitude to the technical support team, Ms. Pallavi and Ms. Sitali. We hope
This event has provided a platform for expression and inspired creativity and passion in the hearts of all those who witnessed it. Thank you all and have